Okay, so let me do one thing. Let me create the new lab. Okay, this is a lab that I yesterday for someone, and to freeze it. And I hope this one. I don't have a home spend on this guy, right? Can I use it? This one? Right. Yeah, it's working fine. Okay. We already have discussed all those things, right? Like whatever the controllers we have in the SD-WAN solution, we have discussed the vSmart. Okay, we have discussed the vManage. तो मेरा पेन थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है because like the software is not installed in this server right now, so मैं install कर रहा हूँ. But it's fine, you can understand. So this is the vSmart we have discussed. That's totally deal with the control plane. Let me write down this thing, right? Because it's not gonna work over here right now. So the VA Smart is totally going to deal with the control plane only, right? This guy does not have any data plane, okay, not even the management plane, and it receives the policy information from vManage, and then it will push that information to VHS router. Again, the vManage is a pure management plane guy, so this is only going to handle the management plane traffic, not traffic, we call it all the management plane information, right? Like you can do the configuration from here, you can do the troubleshoot from here, okay, and you can do the monitoring from here, right? You can do the analytics from here, whatever the things from the say day one, we can not day one, we can even the call it the day zero, from the day zero to day end, you are present over here only. At the same time, next device we have is a V-bond. Yesterday I not yesterday, last class I told you that the v1, this is provide the bonding, right? The name suggests that's a v bond, so I'm going to provide the bonding between all the SD-WAN component. And then last we have a VHS device, right? This is the VHS is what is for the pure data plane traffic. Even this guy does not have any control plane, right? So the VHS is only going to form the neighborship, right? The data plane neighborship with the other VHS router. So between the two VHS, they have a IP sector, राइट? सो यही एक डिवाइस है, जो तुम्हारा जो VHS डिवाइस है, यही जो डिवाइस है, ये तुम्हारे कहाँ पे प्रेजेंट हो गए? तुम्हारे कस्टमर एंड पे, मतलब तुम्हारे जो कस्टमर एंड होगा वहां पे VHS लगे होंगे, दिस गाय, एंड जो तुम्हारा DC होगा, और वी कैन कॉल इट, जहां पे तुम कंट्रोलर को इंस्टॉल करोगे, जहां पे तुम कंट्रोलर को रखोगे. यस्टरडे वी हैव सीन दैट, राइट? यू कैन पुट द कंट्रोलर इन द डिफरेंट डिफरेंट प्लेस. Either you can put the controller on the cloud, either you can put the controller in the in-premise network, right? तुम अपने खुद के नेटवर्क में, खुद के घर में, या खुद के ऑफिस में भी तुम कंट्रोल को रख सकते हो. इट्स टोटली अप टू द रिक्वायरमेंट. अगर तुम्हारे पास, इफ यू हैव अ गुड बजट, राइट, और तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारा कोई भी अटैक हो. सो नॉर्मली देखो, अटैक कहाँ होता है पता है? छोटे छोटे चीजों को पकड़ो. अटैक हमेशा नॉर्मली पब्लिक आईपी पे होता है, मैक्सिमम टाइम. आई कैन कॉल इट 98%, 97% जो अटैक होता है ना, वो पब्लिक आईपी पे होता है. और ऑफ कोर्स यार, अगर तुम कंट्रोलर को लोगे, एंड इफ यू वांट टू पुट दैट कंट्रोलर ऑन द क्लाउड साइड, मे बी एज़्योर ऑन द GCP, तो तुमको पब्लिक आईपी चाहिए होगा. सो इन दैट केस, दे सी, आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स अ बैड थिंग, राइट? मोस्ट ऑफ द कंपनी, मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर यूजिंग द सेम थिंग, द क्लाउड. बट हाँ, अटैक होने का चांस है. सो द लाइक, इफ यू हैव अ गुड बजट, राइट, देन यू कैन हैव योर ओन डेटा सेंटर. तुम देखते हो जितनी भी बड़ी कंपनियां होती है, लाइक गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, एज़्योर हो गई, एक्सेंचर हो गई, ये सबकी अपनी क्लाउड होती है.
मोस्ट ऑफ द थिंग ये अपने क्लाउड पे ही सब कुछ रखते हैं, to just provide the security. And this guy, this part is totally a controller part. So you can put this guy anywhere. It's totally up to you. So the same thing like yesterday, I saw you the topology, right? The same topology that I'm going to draw on the EVNG right now. So you can have a same access. Just I'll give you the access of this one. So तुम IP का access लो, यहाँ से login करो, and I already installed everything over here right now in the node. So if you just go, if you just type the web tailor, so you have a vBond, you have a vEdges, you have vManage and vSmart. All the devices are here. So you don't need to add any other devices, right? So you can do the practical of everything. So I'm just taking the right now, I just requirement of the one vBond, okay, and one vSmart and one vManage. देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट समझना चीजों को, क्योंकि नया टेक्नोलॉजी है, कमांड्स भी नहीं है, नए होंगे, सब कुछ नया होगा, तो चीजों को पकड़ना अगेन थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इवेंचुअली समझ में आ जाएगा. If you're planning to install all these devices like a V1 and WebTela SD-WAN solution devices in your own laptop, you can do that. Okay, I'll give you the one number. You can contact that guy. He will help you to set up the lab. बट अगेन तुम्हारे पास मिनिमम रैम होना चाहिए. देखो 32 GB पे चल जाएगा आराम से, ठीक है, बट 32 GB पे बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा तुम्हारा कंप्यूटर. And now I'm going to have a three sites. I'm going to take a one headquarter and the two branch office. So I'm going to take the three VHS router. All done. So I'll do one thing. I'll put the V manage the top one. Then we have a V smart, and then we have a V bond. मुझे इस सारे बंदे को एक ही नेटवर्क के अंदर रखना है. Then what I'm going to do, I'm just going to take the two switch right now, one for the in-band connection, one for the out-band connection. So take a switch. क्योंकि इवेंचुअली मुझे है ना कंट्रोलर के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है. So let's do one thing now. I'll put the same subnet, right? The same एक ही subnet के अंदर मैं देता हूँ सबको. So this is the switch one, switch 8. So this is for the in-band connection. Let me, why this epic pen is not still working? Oh man, I don't know why it's not getting installed. So I'll do one thing. Let's provide the connectivity between this guy to this guy. Or maybe take this all the routers first of all, right? All the take all the node. So I need one router for the MPLS, one router for the ISP internet, and one router, two router, three routers for the three different site. So I'm just taking the three normal router. So this is not a WebTeller router. This is a normal iOS router. It's not going to support the SD-WAN solution. This is just going to provide the underlay architecture, right? So my SD-WAN solution is a overlay. So we have to take a underlay, right? Because overlay is totally depend on the underlay architecture. I think the three one, right? Why it's only one coming? Okay. So now let's set up the lab. So I'm going to put this guy over here, and the V routers. This should be. I can put it over here. I'm going to connect this guy first of all. Come on.
big 0/0, I'm going to put the big 0/3 to this guy so that I can utilize all those things. So this is the gig 0/3. I'm going to put this is 8, and this is the gig 0/0. And after that, I'm going to put this guy to each 0. And here this guy as well as the be smart to the this person. And the last the V1. And all my internal network is going to connect with the Ethernet 0/0. So this is the ETH 0/0 that I'm going to further connect with the vManage to this device. So whatever the people are setting behind this box, right, they can access through this link to the vManage, and whatever the people are setting over here, they can access this vManage through this box. देखो थोड़ा सा लैब सेटअप करने में थोड़ा सा मेहनत लगता है SD-WAN का, बट हाँ एक बार सेटअप हो गया उसके बाद सारा काम वही से। ओके, अगर हमारे लैपटॉप में 32 GB रैम ना हो तो? ना चलेगा। 32 GB मैंने मिनिमम बोल रखा है, उसमें भी प्रॉब्लम्स होंगे, मतलब ज्यादा तुम साइट को नहीं लगा सकते हो। मतलब जैसे कि मैंने अभी 64 GB रैम दे रखा है, 64 या 180 GB समथिंग रैम दे रखा है, 128 GB रैम दे रखा है। And now we have a different sites. So we have this guy. So I'm going to put the one headquarter of my network. ये लो ये वाली टॉपिक दोबारा बताना, ये जो पीछे वाला स्विच क्यों लगाया है ये, जिससे बता रहा हूँ अब, पिन सब कुछ बता रहा हूँ, रुक जा मुझे लगाने दे, I'll tell you। अभी मैंने क्या बताया, this is the in one, the people are setting over here, right, behind this box, it's not a mandate part, okay, it's not a mandate to put this switches over there, I can remove this one, but take example if the देखो अभी let me design this topic then I explain you with the epic web, don't worry, मैं सारे से बताऊंगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ रही है यहाँ पे। Is this your local server? Yes dude, Oh, great. देख पब्लिक प्राइवेट आईपी, मैंने आरडीपी से कनेक्ट कर रखा है इसको अभी। सो दिस इज ऑल माय इन माय होम राइट नाउ। So we can also use with RDP or हाँ यू कैन यूज नॉट आरडीपी, आई विल टेल यू वन थिंग, देखो आरडीपी तुम लोग यूज नहीं कर सकते, सी थिंग इज दैट लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग फॉर द फ्यू मिनट। Hmm. सो ऐसा है कि okay, so now this is my one I can call it is a MPLS router, this is the my internet again। मैं यहाँ पे दो बैकअप इसलिए ले रहा हूँ सो दैट राइट, अगर मेरा प्राइमरी अगर मेरा एक आईएसपी डाउन भी हो गया सो आई हैव अ बैकअप वन। All done, and I need a few more things over here right now. So this is the another VH router. I don't have so much space, so I can get like this way right now. Okay, so this I'm going to use the gig zeros last one। So देखो यहाँ पे एक एलएलडी का भी कॉन्सेप्ट आता है, लो लेवल डिजाइन का। अगर तुम नोटिस करो कि मैंने पोर्ट्स है ना अपने अकॉर्डिंगली लगाया है, और ये क्यों लगाया है तुमको सब समझ में कब आएगा, जब मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा ऑन फ्रॉम द बी मैनेजर राइट। तो तुम देखोगे कि मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द माई लाइक पोर्ट नंबर। तो मैं जो पोर्ट नंबर लगा रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग लगा रहा हूँ कि मुझे कौन सा पोर्ट किस इंटरफेस पे लगाना है। इट्स कॉल्ड एलएलडी, लो लेवल डिजाइन राइट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं लो लेवल डिजाइन अपना एलएलडी सही नहीं रखूंगा देन क्या होगा कि वी हैव टू पुट द ह्यूज नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑन द वी मैनेज। देखो रिजल्ट तो मिलेगा सेम, आउटपुट भी आएगा,
but we need to do the huge number of configurations. किसी का mic on है? Oh, law. One request, like whenever you are designing, right? Just make IP address also हाँ, for मैं user. डालूंगा। मैं मेरी आदत हो। Okay. And edge router you have mentioned, right? So that site also you just mentioned, just ABCs and like हाँ that. हाँ, वो सब कुछ मैं करो। Let me, I need to connect with 0/0. So this should be the 0/0, so that the 0/0 is going to have the connectivity with the MPLS, and this 0/0 has a connectivity with the MPLS. उसके बाद then I'm going to put the connectivity with the command 0/1 to this guy. So सारे के सारे 0/1 जो होंगे ना, वो तुम्हारे चला जाएंगे ISP से। देखो, अगर तुम इसको ऐसे सोचोगे ना कि सिमिलर टू द डीएमई पेन, तो बहुत अच्छा है, इजीली समझ में आएगा। ये पूरा डीएमई पेन डिटो है। देखो, एसडी वैन क्या है यार? एसडी वैन इम्प्रूवमेंट ही तो है। किसका? आई वैन टेक्नोलॉजी का। आई वैन क्या था मेरा? आई वैन जो था, इंटेलिजेंट वैन, वो क्या था? दैट वाज द डीएमई पेन। तो उसी का तो इम्प्रूवमेंट है एसडी वैन। तो तुम उसको, इसका एसडी वैन को सोचोगे ना इसके अकॉर्डिंग, डीएमई पेन के अकॉर्डिंग, चीजें बहुत आसान हो जाएगी। Now we have two things over there. So for the internal router, I'm going to use the this guy's the internal router, जो मेरे LAN से connected होंगे, LAN से जैसे, but like I can say that this is the default gateway, right? This router will become a default gateway for the users. Okay, I'll take on one more device. It's a router Cisco. लेकिन ये जो राउटर्स हैं, ये तुमको SD-WAN सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ नॉर्मल राउटर्स हैं, और ट्रेडिशनल राउटर। Okay, right. So let's now do one thing. Now I need a one more thing. That's a CA server, right? जो मेरा काम क्या करेगा? Authentication. So Windows server, I can take it from here, right? And yeah, यही बंदा होगा जो सबको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करेगा, मतलब नॉट ऑथेंटिक, सर्टिफिकेट देगा। OMG, I don't have a ports myself. इस विंडोज सर्वर के ये जो आप विंडोज सर्वर लगा रहे हो इसके जगह में राउटर यूज नहीं कर सकते क्या? कर सकते, बट राउटर पे एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। इस पे सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी हो। अच्छा। राउटर पे सीए, तुमको पहले उसको सीए सर्वर बनाना पड़ेगा राउटर को। सो अगर तुम नोटिस करना, मेरा जो जितना भी इथरनेट पोर्ट है ना, 0, मैंने उसको कहाँ रख रखा है पता है? इफ यू नोटिस, सबको मैंने लैन में रख रखा है, मतलब इंटरनल साइड। So if you see, let me, give me 1 minute, let me check the my pigment why it's not coming up, because I need to explain something. Just download. Okay, run, accept, install. I don't even download this right now. It's not completing. पहले टास्क मैनेजर ऑन करके अब इसको क्लोज कर दो।
ठीक है यार, मुझे सर्वर डायरेक्टली विंडोज में क्लिक करके यू कैन डू इट, द विंडोज का आइकन है। हेलो, हैप्पी बर्थडे। आप बताओ कहाँ है? नहीं यार, मैं कहीं और जा रहा हूँ आज। कहीं और जा रहा हूँ। कहीं तो जा रहा हूँ यार। नहीं नहीं, आप जाओ। आप कब तक आ जाओगे वहां से? 4-5 दिन? वेदर तो सेक्सी है। डिपेंड करता है किसके साथ जा रहा हूँ। हाँ, तो आज एनएच वालों को दे दो एक एक लाख रुपए सबको। कहीं डाउनलोड हुआ रही है। Yeah, it's not working with this guy. Anyways, I'll do one thing. I'll take a screenshot. वो उस पे क्लिक करना होगा शायद। किस पे? वो फर्स्ट जो नीचे पैनल है ना नीचे, हाँ उस पे उसके बगल वाले पे, उसके बगल वाले पे वो येलो साइन दे रहा, ब्लिंक कर रहा, हाँ उस पे। ओके। No. Yeah. No. No. कहीं नहीं खुला है। कोई डाउनलोड नहीं हुआ फालतू में। मुझे करना पड़ेगा, मैं कर लूंगा बाद में, छोटा मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करता चीजों को। So let me do one thing. Let me first give the IP addresses all everywhere. So I'll do one thing for this guy. I'll give the IP is 1672 range, 172.16.3 dot, or I can call it 100 for this guy. The vman is right, and same way may I'll configure this guy as a 172.16.3.101. That's for the vsmart. And for the vbond 172.16.3.101, 102, right? That's the vbond. And for this guy, its server will be 103. And all are the /24, so it's not a /16. So the subnet that I'm using over there right now, let me write on the subnet. The subnet is 172.16.3.0/24. And let me change the color. I'll make it, so this one is fine. So this is the subnet that I'm using on this side. तो तुम समझो यहाँ पे ये सारे के सारे एक ही नेटवर्क के पार्ट है। एंड इवन दिस गाय, सो द स्विच डज नॉट हैव एनी आईपी कॉन्फ़िगरेशन, तो माय डिफॉल्ट गेटवे क्या हो जाएगा? सो 172.16.3. I can call it 254 will be the default gateway for whom my all controller. So this IP address will be configured on this particular interface gig 0/0. Same way, let's configure it over here. This internal side. I'm sorry. The text and 192.1.1 I can configure /24. So 1.0 का सबनेट यहाँ पे यूज करूंगा मैं इंटरनल में, एंड 1.2 will be vsmart. बस that one is कहाँ चला गया? Yeah. 103. देखो एक बार एसडीवैन समझ में आ जाएगा ना, बाकी उसका सारा ओवरले क्लियर हो जाएगा तुम लोग का।
ओवरले इन द सेंस कि एस डी एक्सेस भी आसान हो जाएगा, एंड उसके बाद अगेन राइट द एसीआई पार्ट सारा इजी हो जाएगा, सेगमेंट राउटिंग। क्योंकि देखो फर्स्ट बार वही सबको हार्ड लगता है। मतलब 4 and 1 of 5, I think so the IP address of my own, I think my own PC right now. Let me check IP config, and I hope this is the IP address. This is the VMnet. Yep. So the nick my nick adapter has IP address is the 1.5. So 1.0 का सबने मैंने जान से लिया था, so that I can access the GUI, right? Same way में this side I can use the IP address now. So let's put the text, and for this side let me write down the, so this is the VS, between this guy I'm going to use this is the router number 4, so better to use the 4.0 subnet away, right? So 192.4.4/24, right? So this guy has IP address is a 404, and same way I can configure this guy as a 4.1/24. So this guy, this interface, the router, this interface is the 4.1. So यहाँ पे जो subnet use हो रहा है वो कौन सा use हो रहा है? So here the subnet that I'm going to use. So for the subnet color I'm going to use the orange one. So the subnet is 4.0/24. So this is the orange one, and okay, save it. All good. So all there are orange color are the subnet. So let me take the one more subnet for this guy now, the internal network. So 192.1.0/24. So this is the guy. That's the orange one again. All good. So this, or this one. तो यहाँ पे इस साइड जो है वो अलग नेटवर्क चल रहा है, ठीक है, 1.0/24 का। यहाँ से यहाँ तक जो चल रहा है वो अलग नेटवर्क चल रहा है, ठीक है, और इसके बीच में जो चल रहा है नेटवर्क वो अलग चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक। And now the next part is what on this guy, right? So this is the router number 10. So better to use 10.0/24, right? इसका एक बार क्या करना, जब once I'm done, then you can take a snap of this guy, because जब मैं configuration करूंगा then you have to take a picture, right? वो picture देखना पड़ेगा most of the time. So I can configure the 10.10/24 this guy. Okay, and I don't have a space, so I can just put the 10.1. I'm not going to write the /24 right now. So this is the 10.1. The gig 0/2. Same way this side, this is the router number 11, so I can use the 11.0/24. Oh, 11.11/24. So I'm not going to write on the the orange color over there, because I don't have much space. So ज़्यादा ही lengthy हो जाएगा वो. So you can assume this is the subnet of /24 11.0. Same way this is the 11.1. All good. Now we have between this guy to this guy. So this is router number 5 and this is router number 10. So 10 and 5 we can count is like a 105, right? So 192.168.105. So right now मैं सारे का सारा private IP use कर रहा हूँ 190 का range. So public IP नहीं है, but normally in the production you will see the public IP, and this would be 105.10.
All good. This guy. So this segment has done. Now we can make this segment. So this is the normal. This router is let me write down this guy name. So I can call it. We do have edit option, right? And where's the name? I can. This is my MPLS router. Okay. So this is my MPLS, and so normally again the production you have a multiple router in the MPLS network. So I'm assuming this is the MPLS. MPLS is not configured. I'm just assuming that. And same way, and this guy. अगर तुमको configure करना है, then you can configure. It's not a big deal. You can configure it. But again, we are in the learning phase right now, so we are just assuming all those things. अगर तुम configure करना चाहो तो कर सकते हो. This is ISP, right? Now this guy, I'm going to use the subnet. This is router number 10, right? So 106, I can use it. .10. This is for the gig 0/2 interface. Let me make a duplicate, and this is for the gig 0/0 of the VH, and this will be what? It's 106. Same way, we make a duplicate this guy and make another duplicate. So this guy has done now this side and this side. So I can call it, this guy is what? This is the router number 11. So I can call it 116, right? .11, and this guy will be 116 dot. I hope you guys are understanding my ऐसे subnet क्यों ले रहा हूँ different हो, just according to the router name. Same way, now we are left with this side now, the VH5, and this is the router number 11. So we can go for the 115, right? देखो मुझे पता है बोर हो रहे होगा आईपी में, तो ऐसा है कि करना तो पड़ेगा. 115, and this should be the 11, and this should be the 1155. Okay, this should be this guy. The 5. Okay, and now last, my internal network. So this is what I can call this guy as a, where's that? This would be the, this is the VH5 and this is the 12. So 125 I can take it, right? So 125.5, and this would be the 125.12. Same way, I have some internal route जो मेरे LAN से connected होंगे. So what I can do over there, I'm going to use the VLAN. So I'm just again hypothetically, कोई VLAN configure नहीं है, so the VLAN number 10, I'm going to use the 10.10.1 1.0/24, right? And for the VLAN number 20, so this will these are the loopbacks that I'm going to create on the router number 12. That's my internal router. 10.10.2.0/24. 10 के लिए 10 कर लेते हैं, बेस्ट होगा आई थिंक सो. एंड 20 के लिए 20 कर लेते हैं. ये राउटर एंड डिवाइसेस की तरह यूज हो रहा है क्या? Yeah, this is the traditional router, guys. This is the traditional router. तो एंड डिवाइस ही है मेरा.
same way now configure this duplicate. आपने जो VLAN 10 and 20 बनाया है, मतलब वो हमारा लूप बैक रहेगा इस केस Right, में right. यहाँ पे। मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा उस लूप बैक पे कि दिस इज फॉर द VLAN नंबर 10 and this is for the VLAN number 20. So this is the router is what I don't know the router is make it 16.6. And this is for the 16.1. And now the same loop back that I'm going to create, because eventually we have to provide the communication between these two subnet, right? So this will be the 30, because this is the VLAN number 30, and this is the 40, and this is for the 40. All done, right? So we have two different site, guys. So let me write on the site name. So this is in Delhi, and let me make a different size, 15, and make a different color. So I'll go for the blue, and blue nahi hai. Anyways, you can understand that this is the Delhi, and this is Bangalore. All done, right? अब क्या बचा? IP, let me check. IP is done, and everything looks good. एक क्लाउड चाहिए होगा NAT डिवाइस, so that मैं अपने vManage को access कर लूँ, and that let me add it right now, otherwise we'll get some issue, right? GUI में. So no, I'll explain you everything. Don't worry about that. Okay, for the NAT we have to go no network, and I'll take a cloud management cloud, CVT. And this is the management cloud that's gonna help me to create the GUI access for the vManager. All good, right? Yep. Nothing else. इसको कुछ configure करने की जरूरत नहीं है. So this is all the setup of, like, my SD-WAN network. Right now we have only two sites. So मैं क्या करता हूँ, एक काम कर लेता हूँ. Let me make a design for this guy, और पहले उससे पहले start कर लेता हूँ मैं सारे डिवाइस को, because start होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. Doesn't matter कि तुम्हारे पास कितना जीबी सर्वर है, थोड़ा सा टाइम लगता है स्टार्ट होने में चीजों को उसको. ये आपने अपने लैपटॉप से ही किया ना, या फिर आपका जो वो सर्वर था वहां से एक्सेस ये किया? सर मेरे सर्वर बगल में बैठा पड़ा है. अच्छा, उससे आपने एक्सेस किया, तो आपने VMware से इसको नहीं एक्टिवेट किया? सब VMware से चल रहा है भाई. अच्छा, So if आपका you see, VMware कनेक्ट if है क्या आपके सर्वर से? yeah, if you see right now, this is the VM which is running, and the 120. So देखो मैंने क्या किया, मैं बताता हूँ, सुनो मेरी बात. इसको कैंसिल करो अभी. ये मेरा नॉर्मल पीसी है, राइट? दिस माय नॉर्मल पीसी. मैंने इस नॉर्मल पीसी पे क्या कर रखा है कि मैंने RDP सेशन लिया, ठीक है, और मेरा सर्वर ऑन है. यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, मेरा सर्वर ऑन है. अल्सो यू वन मिनट, अल्सो यू वन मिनट, एक मिनट दो, मुझे दिखाता हूँ. ओके, लेट मी ऑन माय वीडियो एंड आई शो यू. कौन सा गंदा है मेरा ईयरफोन, तो समझ में आ जाएगा तुमको थोड़ा सा. सी राइट नाउ, एंड सो दिस इज द सर्वर दैट आई एम पुटिंग अवे राइट नाउ, एंड उसके बाद ये जो है ना मेरा पीसी है, ठीक है.
इस पे मैंने सारा इंस्टॉल कर रखा है। तो मैंने क्या कर रखा है कि मैंने अपने लैपटॉप से ले रखा है इसको एक्सेस। मैंने अपने लैपटॉप से इसको एक्सेस ले रखा है सो दैट मेरे इस पे आरडीपी के थ्रू यहाँ पे मुझे दिख जाए। मैं उसमें भी ले सकता था एक्सेस, बट उसमें क्या है कि ऑडियो ड्राइवर नहीं है। तो ऑडियो ड्राइवर नहीं है तो मैं उस पर क्लास नहीं ले सकता था। समझ में आया आप? हाँ समझ में आया। So now, so सारे डिवाइस स्टार्ट हो गए। Let's do one thing. I'll make some custom shape and square is fine. So this is for till this point. They all are my controllers. Edit and can I use the different color? Save it. So this is my controller, right? जहाँ मेरी सारी चीज प्रेजेंट है। मतलब जो बंदा होगा यहीं पे बैठ के, यहाँ पे एक बंदा बैठेगा और यहीं पे बैठ के पूरे तुम्हारे सारे नेटवर्क को मैनेज करेगा। एंड दिस इज माय एमपीएलएस। सो अब मेरा अपना सर्वर चल रहा है, सारे राउटर ऑन हो रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। मीन टाइम में क्या करता हूँ, उसको डिजाइन कर लेता हूँ कस्टम से। No, your screen is not visible. मेरा स्क्रीन नहीं चल रहा है क्या? No. Visible है. I think you need to switch to shared content if you were watching video first. मुझे कुछ करने की जरूरत थोड़ी ना है। नहीं नहीं, तुम्हें नहीं करना। जिसको नहीं दिख रहा उसको स्विच टू शेयर्ड कंटेंट आ रहा होगा, उधर करना पड़ेगा। ठीक है, अमित को करना पड़ेगा। So this is my one site that's in the Delhi. इसको मैंने दिल्ली में रख दिया। एंड same way we have a duplicate another site in the Bangalore. And again this is my what service provider. So let me take a duplicate of this one. So this is my MPLS and this is my normal ISP. I hope this thing is clear to all of you guys now. Okay, so let me do one thing. Let's take a V manager. I hope the CLI will comes up now. Wait for some time. Login. So I just click on the V manager and I hope recording is going on right now. I don't know. Oh, yeah, it's recording is going on. So I just click on the V manager. जैसे तुम क्लिक करोगे V manager पे, तुमको एक्सेस मिलेगा। I'm just going bit slow right now. शायद चीजें तुमको समझ में आए। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे तुमको रखना पड़ेगा पेशेंस। अगर तुम्हारा लाइक जस्ट टेलिंग यू, इफ यू हैव अ ओन लैपटॉप, अगर तुम उसमें SD-WAN चला रहे हो तो तुमको मिनिमम टू मिनिमम 20 से 25 मिनट लग जाएंगे तुमको V मैनेजर को अप आने में नॉर्मली। सिर्फ अपने लैपटॉप में अगर मैं हाँ, अगर तुम लैपटॉप में कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास 32 GB रैम है, तुम लैपटॉप में कर रहे हो, तुमको लगेंगे 64 GB रैम में, फिर भी लगेंगे। रीजन इज दैट वी मैनेजर को अपाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तुमको लॉगिन मांगेगा, वो तुमसे वो लॉगिन मांगेगा। तुम लॉगिन भी करोगे, पासवर्ड भी डालोगे, एडमिन एडमिन, ओके, बट द प्रॉब्लम इज दैट तुमको वो स्टार्ट ही नहीं करके देगा, CLI ही नहीं देगा until unless you are not getting this message। और कभी कभी ये मैसेज तुमको आ भी जाएगा, फिर भी तुम्हारा स्टार्ट होगा, क्योंकि इसको 20-25 मिनट लगेंगे ऑन होने में। फॉर मी, तो इस अगर मैं देखूं, कल मैं एक बंदे को बता रहा था एंड मुझे ऑलमोस्ट लगे थे 12 मिनट। तो राइट नाउ जिससे जल्दी आ गया। ओके, सो बिकॉज फिजिकल सर्वर है मेरे पास तो सब कुछ जल्दी हो रहा है। तो बट नॉर्मली अगर तुम करोगे तो टाइम लगेंगे, तो पेशेंस रखना चीजों को लेकर। सो वंस यू पुट द एडमिन एंड पासवर्ड एडमिन,
this is coming in the some, you know, what we call some of the vManager images. I don't know why this coming, maybe मेरा older होगा इसलिए आ रहा है ये चीजें. There's nothing you have to do, just select the one and say the yes, wait for some time. हम तो ऐसे भी कर सकते हैं ना कि सबसे पहले बी मैनेज को डिप्लॉय करके उसको रन करके उसके बाद सारा लैब हम सेट करेंगे आराम से धीरे धीरे। मैं ये भी कर सकता हूँ, लाइक अगर मैं बताऊं कि जब मैं, बिकॉज सी लेट यू वन थिंग, अगर तुमको याद होगा, मैंने तुमको बोल रखा था कि इन SD-WAN इन ट्रेडिशनल राउटिंग we have a concept of what VRF, right? In traditional routing we have a concept of what VRF. VRF क्या करता था? VRF क्या करता था? राउटिंग टेबल को सेग्रीगेट करता था, राइट? सेग्रीगेट द राउटिंग टेबल, यही काम था. मतलब तुम्हारा एक राउटर था, उसको मल्टीपल राउटिंग टेबल में से डिवाइड करता था. फॉर एग्जांपल दिस माय राउटर, एंड बाय डिफॉल्ट दिस राउटर हैज अ ओनली वन राउटिंग टेबल. किसी का माइक ऑन ऑफ करो. तो मैं क्या करता था, इस राउटर पे मल्टीपल राउटिंग टेबल बना देता था, 1 2 3 एंड 4. किसके लिए? मल्टीपल कस्टमर, फॉर दिस इज फॉर द कस्टमर. किसी का माइक ऑन है? कस्टमर नंबर 1, कस्टमर नंबर 2, कस्टमर नंबर 3 एंड कस्टमर नंबर 4. कस्टमर 4, राइट? तो मैं एक ही राउटर पे 4 राउटिंग टेबल बना लिया. ये क्यों करता था? इफ यू हैव अ मल्टी टेनेंसी. मल्टी टेनेंसी का मतलब ये होता है कि अगर तुम्हारी कंपनी और तुम्हारी सर्विस प्रोवाइडर मल्टीपल कस्टमर को सर्विस दे रही है, तो हर कस्टमर क्या चाहेगा कि मेरा जो राउट होगा, फॉर एग्जांपल दिस कस्टमर हैज अ राउट 1.0 एंड दिस कस्टमर हैज अ 2.0, दिस कस्टमर 3.0 एंड दिस कस्टमर हैज अ 4.0. मैं चाहता हूं कि ये कस्टमर के राउट एक दूसरे से एक्सचेंज ना हो. आई नीड अ सिक्योरिटी, राइट? आई नीड अ सिक्योरिटी. तो मैं चाहता हूं कि एक दूसरे के राउट एक दूसरे से एक्सचेंज ना हो. तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, भैया मैं सेपरेट राउटर तो नहीं ले सकता हर कस्टमर के लिए. ऐसा तो नहीं होगा कि मैं इसके लिए एक राउटर ले लूं, इसके लिए एक राउटर ले लूं, इसके लिए एक राउटर ले लूं और इसके लिए एक राउटर ले लूं. कॉस्ट ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा. तो हमने क्या किया, हमने वर्चुअलाइजेशन लाया. हमने क्या किया, वर्चुअलाइजेशन लाया. तो हमने क्या किया, लेयर 3 में VRF लाया और लेयर 2 पे क्या लाया, VLAN, राइट? हमने VRF लाया लेयर 3 पे और लेयर 2 पे क्या लाया, VLAN. VLAN भी क्या करता है, एक तुम्हारा स्विच होता है, उस पे मल्टीपल VLAN बना दो. VLAN नंबर 10 के लिए एक मैक एड्रेस टेबल हो गया, VLAN नंबर 20 के लिए एक मैक एड्रेस टेबल हो गया, VLAN नंबर 30 के लिए मैक एड्रेस. तो VLAN 10, VLAN नंबर 20, VLAN 30. सो दिस इज फॉर द एक्सेंचर, दिस इज फॉर द जूनिपर, दिस इज फॉर द सिस्को. हर कस्टमर के लिए मैंने क्या किया, अलग अलग मैक एड्रेस टेबल बना दिए, सो दैट ओवरलैपिंग ना हो, so that overlapping now. So we have a concept, right? In the traditional routing, we have a concept of what? VRF and VLAN to segregate the routing table and to segregate the MAC address table. I'm just talking about the traditional routing. Routing switching की बात कर रहा हूँ. Don't think about the security perspective and service provider. Service provider में we have a concept of what? SDR, secure domain routing. In the iOS XR service provider router, we have a SDR. If I talk about the security, we have a contexting. If I talk about the data center, we have a context of VDC. So we have this thing, right? जिससे तुम segregate कर सकते हो. But in if I talk about the web tailor, right? In web tailor SD-WAN solution, what we have a concept of VPN. अब समझो इस बात को, VPN तुम्हारा क्या करता था? तुम्हारा, मैंने डेफिनेशन बताया था VPN का, क्या बताया था डेफिनेशन, कि इट प्रोवाइड द कनेक्टिविटी between two site, two or more site over public network. यही तो करता था. VPN का काम क्या करता था? यही करता था. तो मैं एक VPN इसके लिए बना दूंगा, एक VPN अनदर कस्टमर के लिए बना दूंगा, एक VPN अनदर कस्टमर के लिए बना दूंगा, एक VPN अनदर कस्टमर के लिए बनाऊंगा, एक VPN अनदर कस्टमर के लिए बना दूंगा. सो दिस इज फॉर द कस्टमर 1, this is for the customer number 2, this is for the customer 3, this is for the customer 4, this is for the customer 5.
तो जो कस्टमर 1 के राउट होंगे वो यहाँ से ट्रैवल हो जाएंगे, कस्टमर 2 के राउट होंगे यहाँ से ट्रैवल हो, कस्टमर 3 के राउट यहाँ से ट्रैवल हो, कस्टमर 4 के राउट यहाँ से ट्रैवल हो, कस्टमर 5 के राउट यहाँ से ट्रैवल हो। मतलब एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं होंगे राउट कभी भी। क्यों? क्योंकि मैंने एक सेपरेट टनल बना दिया। आई हैव क्रिएटेड अ सेपरेट टनल फॉर ईच कस्टमर। That's a behavior of normal VPN. That's a behavior of normal VPN. And this tunnel is what? It's a logical tunnel. Logical tunnel means what? You can't see, but it is present. Right? Same thing in the SD-WAN. What happened? Instead of VRF, instead of MAC, SDR, we have a concept of what? VPN. अगर तुमको segregate करना है, if you want to segregate your routing table, if you want to segregate your customer route, right, then you have to create the VPN. If you want to, then you have to create VPN. VPN is equal to the VRF in SD-WAN. VRF हो गया तुम्हारे ट्रेडिशनल राउटिंग में, VPN हो गया तुम्हारे SD-WAN में। अब यहाँ पे जो VPN है ना SD-WAN में, तुम्हारे पास 3 टाइप के VPN है। पहला VPN क्या बोलता है कि मेरा जो नाम है ना उसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसपोर्ट VPN। उसको बोलेंगे हम ट्रांसपोर्ट VPN। अगर तुमको याद होगा, if you remember, by default on the switch we have one VLAN. That's a VLAN number 1. सारे के सारे पोर्ट्स VLAN नंबर 1 से बिलोंग करते हैं। सारे के सारे पोर्ट VLAN नंबर 1 से बिलोंग करते हैं। And that VLAN is by default present on the switch. वो VLAN by default present होता है स्विच पे। तुम उसको डिलीट भी नहीं कर सकते हो, ना मॉडिफाई कर सकते हो, नथिंग। Same thing, this transport VPN, right, is by default present, and this VPN is called as a VPN 0. The sometimes people call as a VPN 0, same like a native VLAN बोलते हैं। VLAN 1 को हम क्या बोलते हैं? VLAN number 1 we can call as a native VLAN. Same thing, this is the VPN 0, we can call as a transport VPN. नाम से ही पता चल रहा है कि this is a transport VPN. It means that it provide the connectivity with WAN network like a transport. ट्रांसपोर्ट मतलब क्या हो गया? तुम्हारा MPLS और ISP or any 4G connection or LTE connection, anything, it's totally up to you. कहने का मतलब क्या है कि मान लो, यहाँ पे समझना, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, यहीं से तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट है। मान लो ये मेरा एक VH राउटर है, ठीक है, मेरा एक VH राउटर है ये वाला। ये कनेक्टेड किससे? मेरे इंटरनल राउटर से। और यहाँ पे मेरे क्या है? लैन, मेरे लैन नेटवर्क है। ये मेरा VH किससे कनेक्टेड होगा? MPLS से। तो इसकी जो ये इंटरफेस होगी ना, कौन सी वाली? ये वाली, this one. This one is the part of the different VPN, and this one is the part of the different. This VPN, this is the part of the what? This I can call it 0/0. This is the part of what? Transport VPN. ये इंटरफेस जो होगा ना वो तुम्हारा ट्रांसपोर्ट VPN का पार्ट होगा, because this interface is connected with the what? MPLS. Again, at the same way, if you have another transport ISP, right, service provider, the normal internet, and if you have a connectivity like this, and again we have 0/1, right, this interface again is a part of what?
VPN 0 कैसे करते थे अगर तुमको याद होगा, लेट मी शो यू दिस पार्ट। तुमने VRF किया होगा, राइट? तो VRF में कैसे करते थे तुम? एक पर्टिकुलर VRF बना देते, IP VRF CCI, टेक एग्जांपल, एंड उस VRF में इंटरफेस को डाल देते, राइट? तो once you create the VRF, then you have to go on the interface and see that IP VRF forwarding CCI and then IP address and no shut। ऐसे ही तो करते थे। पहले तुमने क्या किया, VRF बनाया CCI के नाम से, और इस इंटरफेस को क्या किया, VRF का मेंबर बनाया। VLAN को याद पारो, VLAN कैसे करते थे? VLAN कॉन्फ़िगरेशन, VLAN 10 बनाया पहले, उसके बाद क्या किया, एग्जिट किया, इंटरफेस में गए, क्या किया, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN नंबर 10। तो मैंने क्या पहले क्या किया, पहले VLAN को बनाया, VLAN को बनाने के बाद क्या किया, इस इंटरफेस को VLAN का मेंबर बना दिया। सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू हियर नाउ। अगर तुम्हारे ये इंटरफेस किसी और VPN के मेंबर होंगे, देन यू हैव टू मेक दिस इंटरफेस एज अ VPN 0। नेक्स्ट VPN वी हैव इज कॉल्ड एज अ मैनेजमेंट VPN। नाम से ही पता चल रहा है, टू मैनेज द SD-WAN कंपोनेंट। इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 5112। तो मैनेजमेंट जो ट्रैफिक होगी ना, जो मैनेजमेंट ट्रैफिक होगी वो डायरेक्टली किस में आएगी, VPN 5112 में। इट मींस दैट, देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात हो रही है कि अगर मेरे मैनेजमेंट टनल को कोई, VPN का मतलब क्या होगा, VRF, नॉर्मल लैंग्वेज में VPN कॉल है टनल। अगर मेरे मैनेजमेंट VPN पे इफेक्ट पड़ा तो ये काम करेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस पे इफेक्ट पड़ा तो ये काम करेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ राउटिंग टेबल, आई कैन कॉल इट मैक एड्रेस टेबल, वॉट एवर यू कैन कॉल इट। दिस इज द ब्यूटी ऑफ सेग्रीगेशन। हम सेग्रीगेशन क्यों करते हैं, ताकि एक से दूसरे पे इफेक्ट ना पड़े। ये लोग डिपेंडेंट नहीं है, दे ऑल आर इंडिपेंडेंट। द नेक्स्ट VPN वी हैव कॉल्ड एज व्हाट, सर्विस VPN। इसमें होंगे तुम्हारे सर्विस राउट, मतलब नॉर्मल राउट, मतलब ट्रेडिशनल राउट, EIGRP, OSPF, स्टैटिक, BGP, सारे राउट यहीं पे होंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो टोपोलॉजी था ना ये वाला, तो ये जो नेटवर्क होंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज द 10.10.1.0/24, देन 10.10.2.0/24। तो मैं क्या चाहता हूं पता है, यहाँ इस साइड जो बनेगा ना काम, इस साइड का पूरा काम होगा, ये किधर में जाएगा, सर्विस VPN में, नॉट दिस साइड, कंप्लीट फ्रॉम दिस साइड। तो ये वाला पार्ट चला गया ट्रांसपोर्ट, ये वाला पार्ट चला गया सर्विस, और जो मैनेजमेंट एक्सेस होगा वो चला गया मैनेजमेंट। तो सर्विस VPN जो होगा ना, ये इंटरनल नेटवर्क होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्या करूंगा, सर्विस VPN, इसका जो नंबर है तुम अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हो। सो यू द रेंज ऑफ नंबर, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं बोलूंगा कि ये जो लाइन होंगे ना, ये होंगे VPN 10 के मेंबर, और ये जो लाइन होगा ना वो किसका मेंबर हो जाएगा, VPN 20 का। अगर तुमको याद होगा, मैंने स्टार्टिंग डेज में SD-WAN में क्या बताया था, द ब्यूटी ऑफ SD-WAN इज एंड टू एंड सेगमेंटेशन। और वो कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ VPN। विच VPN, सर्विस VPN। और कूल, यहां तो कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी।
ये सब VPN हम सीखेंगे। हाँ अभी कॉन्फ़िगर करेंगे ना, देखेंगे, सब कुछ देखेंगे भाई। ना जो बाय डिफॉल्ट होता है ना भाई, तुम्हारे डिवाइस पे ना, बाय डिफॉल्ट तुम्हारे डिवाइस पे ये दोनों VPN प्रेजेंट होंगे, ट्रांसपोर्ट एंड मैनेजमेंट। सर्विस VPN इट्स अ यूजर कॉन्फ़िगर VPN। जैसे मैं सर्विस सर्विस का देखो, चीजों को पकड़ो उसके वर्ड से। सर्विस मतलब कोई बंदा सर्विस देगा तो उसको बनाना पड़ेगा ना, इट्स अ यूजर डिफाइंड VPN। मतलब यूजर बनाएगा, इसको क्रिएट करेगा, बट द ट्रांसपोर्ट एंड मैनेजमेंट बाय डिफॉल्ट वो आएगा, इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। So if you just go to the RDP now, let's go to the device, and if you see my device is also working fine now. Admin, where's that? Done, right? And if you see show running config, the very basic command, what you can find, the host name, ये सब देखेंगे बाद में कैसे क्या होता है, forget this one. The right now my concept is what, if you see by default we have a what, VPN 0 and VPN 512. तो बाय डिफॉल्ट ये दोनों VPN तुम्हारे पास होंगे। इसके अलावा जो भी VPN होंगे, राइट, that you have to create user defined VPN, that VPN is called as a service VPN. तो मतलब ये जो राउट्स होंगे ना, ये वाले पूरे राउट्स ये सर्विस VPN के अंदर आएंगे, ये वाले राउट सर्विस VPN के अंदर आएंगे, ये इंटरफेस ट्रांसपोर्ट VPN का मेंबर बनेगा, ये इंटरफेस ट्रांसपोर्ट VPN का मेंबर बनेगा, ये इंटरफेस ट्रांसपोर्ट VPN का मेंबर बनेगा, ETH1। ये इंटरफेस जो मेरे इंटरनल है, यहाँ पे मेरा पीसी होगा। यार आई डोंट नो व्हाई माय पिक पेन इज नॉट वर्किंग, आई रियली हैव नो आइडिया। काम करता तो मैं इस पे दिखा देता है वो खोल के। पता नहीं क्या आता है माइक्रोसॉफ्ट। another install package already released, wait for the install before finish. यस कर दो आप, यस, यस कर दो, फिनिश। फर्मवेयर नहीं है। पता नहीं क्या है, छोड़ रहा हूँ। तो ये जो यहाँ पे जो यूजर बैठे होंगे ना, एक यहाँ पे यूजर होगा, ठीक है। अगर इस यूजर को, मतलब मैं तुम्हारे जो नेटवर्क में यूजर बैठते हैं, इस यूजर को एक्सेस करना होगा ना वी मैनेज को, तो वो किसके थ्रू एक्सेस करेगा? VPN 512 के थ्रू, क्योंकि ये जो इंटरफेस होगा ना, ये किसका मेंबर होगा? ये जो इंटरफेस होगा वो मेंबर होगा VPN 512 का। ये वाला, ये इंटरफेस किसका मेंबर होगा? VPN 0 का, दैट्स कॉल्ड एज अ ट्रांसपोर्ट VPN। ये वाला, इसके अलावा ये वाले किस में चले जाएंगे? सर्विस VPN में। तो इफ यू सी राइट नाउ आई डोंट हैव एनी VPN अपार्ट फ्रॉम द VPN 0 एंड 5 VPN 512, बाय डिफॉल्ट ये क्रिएटेड होंगे। तो तुमको कुछ करना नहीं है, राइट नाउ तुमको ये सारे डिवाइस को क्या करना है? अभी वी मैनेज, वी स्मार्ट, वी वांट
इसको अप लाना पड़ेगा कंट्रोलर, क्योंकि जब तक ये कंट्रोलर अप नहीं आएगा ना, तब तक इसकी इसकी कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी बैंगलोर और दिल्ली की। यही तो था कॉन्सेप्ट डीएमपी पिन का। डीएमपी पिन क्या बोलता था कि भाई पहले तो हब अप आएगा तब स्पोक आएगा। तो पहले मेन ब्रांच को कंट्रोलर को अप, बिकॉज इट्स अ कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग, राइट? So in the controller based networking, what happened, you have to manage each and everything from the controller. You have to manage each and everything from the controller. तो कंट्रोलर तो आप आना चाहिए ना भाई पहले। तो कंट्रोलर कैसे आप करेंगे? तो कंट्रोलर को आप करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रोवाइड द सम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन इन द सेंस ऑफ व्हाट? The normal IP addressing. You have to tell this vManager ki who is my vBond, who is my default gateway, what is my own IP address, what is my VPN 0, what is my name, my time zone. Remember yesterday we have discussed about the time zone concept, right? कि अगर तुम्हारा time mismatch हुआ, right? So you are not able to access the particular services, right? So you have to select the correct time over there. This configuration is called what? This configuration is called as a skinny configuration. This is skinny configuration that you have to conduct, right? You have to run on every controller, not every SD-WAN components, including the VHS. So whatever the configuration that you have to configure on the vSmart, sorry, vManage, the very basic configuration is what? You have to define the name of the device. देखो मैंडेट नहीं है नेम ऑफ द होस्ट नेम कॉन्फ़िगर करना, मैंडेटरी कभी नहीं होता है, बट I'm just because you guys are right now new to this one SD-WAN solution, so तुमको पता होना चाहिए क्या कमांड का क्या मतलब है। अगर तुमको याद होगा, तुम नॉर्मल ट्रेडिशनल राउटिंग में सारा कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे करते थे? एक नॉर्मल राउटर था, उसमें सारा कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे करते थे? तुम सारा का सारा कॉन्फ़िग करते थे कॉन्फ़िग टर्मिनल में, राइट? यहाँ पे इन द केस ऑफ SD-WAN तुम सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे करोगे? अंडर द सिस्टम। Why I'm calling the system? Because the SD-WAN component, right, the device controller, it itself calling कि मैं अपने आप को system ही consider करता हूँ, because I'm like a hardware device. So you have to first go in the config terminal mode, then you have to move in the system, and you have to start your configuration, right? So for example, not this one. For example, I'm just going to config terminal mode, and then what? I have to move in the system because मुझे system की configuration करनी पड़ेगी. And the first configuration is what? If you see right now, मैं config mode से कहाँ पे आ गया? Config system है. Now here you have to define what? Host name. Done. Next thing is what? How do you define the router ID in the like in EHGRP or OSPF? And what is the use of router ID? To identify the person, to identify the router, and you just putting the command who is what? For example, if you have a router EHGRP, then you have to put the EHGRP router ID 1.1.1.1 like this. And if you have a OSPF, then you have to just say that router ID, right? That's it. But in the case of SD-WAN solution, because this is called what? System, because we are doing the configuration for the system only. So here, instead of the router ID, you are calling this guy a system IP. The most important point. लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पे मिथ क्या है? लोगों को लगता है कि like this system IP is the identification of the router. But अभी के लिए तुम इसको कंसीडर कर सकते हो, या दिस इज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द राउटर, बट इसके अलावा इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कहाँ आता है पता है?
पॉलिसी में, पाथ मैनिपुलेशन में। एग्जाम्पल देता हूं, बीजीपी याद है? बीजीपी में राउटर आईडी डिफाइन करते हैं, बीजीपी पे जाओ, उस पर बोल दो बीजीपी राउटर आईडी 1.1.1.1, वही राउटर आईडी, लेट मी शो यू दिस पार्ट। अगर तुम देखो, इफ यू हैव जस्ट गो ऑन द, नॉट दिस वन, if you see, I say that router BGP router ID path selection. If you see, तुम बीजीपी में राउटर आईडी कॉन्फ़िगर करते हो, राइट? एट द सेम टाइम वही राउटर आईडी क्या करता है, तुम्हारा बेस्ट पाथ भी सिलेक्ट करता है कि राइट, इफ यू हैव अ लोअर राउटर आईडी, आई एम गोना प्रेफर दैट गाय, दिस पर्सन। For example, I say the router, this is the router number 1, this is the router number 2, this is the router number 3, and this guy is the router 2.2.2, this router has a 3.3.3.3, this is how the connectivity like this, and if this guy is receiving, this guy is receiving the same route 10.0.0.0.0, 10.0.0.0.0, तो ये बंदा इसको देगा, ये बंदा इसको देगा, कौन सा प्रेफर करेगा R1? जिसका राउटर आईडी छोटा होगा। तो बीजीपी में जो राउटर आईडी का कॉन्सेप्ट है, वही राउटर आईडी क्या करता है, इट्स गोना प्रोवाइड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द राउटर एट द सेम टाइम path selection. Right now, same thing is happening with the case of SD-WAN. यहां पे भी फंडा सेम है। तो right now I'm just using the system IP is what 1.1.1.1, right? देखो यहाँ पे मैंने ये जो लिखा था, ये कमेंट था मेरा, ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगा बिकॉज आई जस्ट यूज द एक्सक्लेमेशन मार्क ओवर देयर, राइट? तो ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, ये जस्ट मैंने ऐसे ही मारा था। The first command, what you have to do, you have to move in the system, and then you have to define the host name, and then you have to define the system IP. Next part is what? We have to define the clock time zone. Where we are present right now, Asia, right? You have a huge number of clock range, and which time zone we are preferring? Kolkata, right? So this case would be capital. Done. Next part is what? Once we have done with this guy, मुझे तो बताना पड़ेगा ना भाई कि ये जो लोकेशन है, this is called what? To identify the location, sorry, not this one. To identify the location of the headquarter, we need to put some identifier, right? And that identifier is called what? Site ID. So I'm going to use the site ID 1 for this guy. It means that for all the controller, I'm going to use the site ID 1. This is for the site ID 2. And this is for the site ID 3. फिर से मैं बोल रहा हूं, ये site ID is identify the location of the devices. At the same time, इसका भी काम क्या होगा? Path selection में इसका यूज होगा। हर चीज बीजीपी डीएमवीपीएन से कोरिलेट करो, चीज अपने आप समझ में आएगी एसडीवैन है क्या। सेम लाइक अ बीजीपी, वी हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, राइट? 12 13 14 एट्रीब्यूट्स हैं, इसमें भी सेम केस है। So the next part is what we need to go on the vmanage.
and say the site ID is what? What? What is the organization name? Remember yesterday we have discussed, right? The org name we have to define when we create the Cisco Smart account on the Cisco website. We need to define, hey, this is the SD-WAN solution for the which organization? This organization. Maybe ABC, XYZ. That name has to be seen. तो मैं जो मेरा organization name that I'm going to use right now, NH India Lab, क्योंकि मेरे पास इसका like I have the key right now. मुझे बनाना पड़ेगा अपना. Last but not least, what we have to tell this person, hey, this vManager, what is the use of this guy? Managing the configuration. What is the use of this guy? To push the policy to the VHS. What is the use of this guy? To onboard every component in the SD-WAN. HR, we can call it, right? HR का काम क्या होता है? सारे भी employee को onboard करना, right? Same this guy, this is the guard, right? HR is going to onboard every person. The first contact of SD-WAN. So मुझे vManage को बताना पड़ेगा who is my vBond and who is my vBond. Done. Commit. हो गया. So running system डिफाइन कर दिया, होस्ट नेम, सिस्टम आईडी डिफाइन कर दिया, साइट आईडी डिफाइन कर दिया, v1 बता दिया कौन है. Now what? Let's do the VPN 0 configuration. If you see right now, so run VPN 0. What you're getting right now, this interface is part of the VPN 0 by default right now. It's 0/0. But this it's 0/0 according to the diagram, it should be the part of the VPN 512. So what we have to do, first of all, we need to go in the VPN 0 because everything you are going to do in the SD-WAN under the VPN. सब कुछ तुम VPN के अंदर ही करोगे because it's provide the end-to-end segmentation. So VPN 0, I say the no interface. What? ETH 0. Now what? I have to call interface ETH1. That's Ethernet 1 interface. I have called this guy. Now let's define the IP address of this guy. 172.16.3.100/24. No shut. Now what? This VPN is eventually a tunnel interface, right? This VPN is called what? It's eventually a tunnel, right? It's an overlay network. तो overlay network है तो tunnel तो होगा. So what we have to call this guy? Hey, listen. By default जो तुम्हारे SD-WAN के इंटरफेसेस होते हैं ना, उसमें देखो, I cannot say like this is the complete firewall, but some basic firewall features are given on the interface. अब फायरवॉल का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भाई ऐसा है कि मैं इनकमिंग ट्रैफिक को एक्सेप्ट नहीं करूंगा. ऐसा है कि मैं इनकमिंग ट्रैफिक को एक्सेप्ट नहीं करूंगा फॉर लिमिटेड ट्रैफिक. Like in the case of what we call ASA firewall, we have received the TCP and UDP, right? Same thing in the SD-WAN. By default, I'm not allowing the traffic, allowing the some traffic, but if you want to allow the all traffic, you have to say, hey, listen, allow all services. अगर तुम इसको allow नहीं करोगे, then you will not receive any kind of control plane traffic on this particular. You will receive some minor traffic, but not all.
And once we have done this, guy, let's put the commit. And I want to show you something else. If you see, जैसे मैंने इसको allow service all बोला, now if you come to the show running config VPN 0, क्या दिखा तुमको? मैंने आईपी एड्रेस डाल दिया इथरनेट 1 में, VPN 0 में जाके पहले नो इंटरफेस E0 हो गया, हटा दिया उसको, पहले ये परसेंट था. If you see, previously it was there. अब तो फिर आईपी भी हट गया होगा ना, मैनेजमेंट आईपी। हाँ ही नहीं था, मैनेजमेंट आईपी दिया ही नहीं अभी तक मैंने. नहीं, वो तो बाय डिफॉल्ट इस इंटरफेस का पार्ट था ना। बाय डिफॉल्ट ये इंटरफेस था, बट इस इंटरफेस पे कोई आईपी नहीं था. हम्म। अगर आईपी होता तो हट जाता, होता तो, बट नहीं था. नहीं समझ में आया। अरे इस इंटरफेस पे कोई आईपी है क्या? नहीं। तो कैसे हटेगा? अगर होता तो हट जाता, मेरा ये कहने का मतलब. नहीं आया? आ गया। तो अब कोई दूसरे इंटरफेस पे इसको डाल देंगे अगर इसकी हाँ, तो रिक्वायरमेंट है। मैंने इसको क्या किया, इसको हटा दिया VPN 0 से, बिकॉज ये कहाँ का पार्ट होना चाहिए था, E0/0, VPN 5112 का, राइट? तो मैंने इसको हटा दिया. अच्छा सर, इसमें जो दो वीपीएन दोनों वी मैनेज ने खुद से बनाया था, वीपीएन 0 एंड वीपीएन बाय डिफॉल्ट ये प्रेजेंट होता है. 512, या बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होता है, बट ये जो इंटरफेस था वो अपने आप उसने ऑटोमेटिकली चूज कर लिया हाँ, रैंडम। बाय डिफॉल्ट सारे इंटरफेसेस VPN 0 के पार्ट होते हैं, अच्छा, लाइक VLAN 1. ओके, तो इसका मतलब 512 में कोई सा भी नहीं इंटरफेस था. नहीं? हाँ, हम डालते हैं, मैनुअली डालेंगे. ओके ओके। अब देखो, मैंने जब टनल सर्विस ऑल किया तो क्या क्या अलाउ हुआ? DHCP अलाउ हो गया, ICMP अलाउ हो गया, DNS अलाउ हो गया. क्या मेरा SSH इनेबल हुआ क्या? क्या मेरा नेटकॉम इनेबल हुआ क्या? एनटीपी तो अभी कोई रोल नहीं है, एसटर्न का रोल नहीं है, लिव इट. HTTPS अलाउ हो गया. क्या मेरा ये दोनों अलाउ हुआ क्या? नहीं हुआ. क्या इस दोनों का काम पड़ेगा क्या? कोर्स पड़ेगा डूड. हम्म। जब तुम SSH करोगे एंड जब तुम पॉलिसी पुश करोगे यहां से यहां पे, तो किस प्रोटोकॉल के थ्रू जाएगा? नेट कॉन्फ। नेट कौन से? नेट कॉन्फ। So let's do one thing. Just go on the VPN 0 interface ETH1 tunnel service, tunnel service all, and sorry, by default all, and then we have to allow service what? Net confirm allow service what? SSD. Basic troubleshoot. Commit. Commit का मतलब सेव करना. Next part is what? Exit. VPN 0 के अंदर क्या करेंगे? VPN 0 is what? Surrounding table, right? यही तो था वीआरएफ का कॉन्सेप्ट. हर वीआरएफ का एक राउटिंग टेबल होता है. VPN 0 हर VLAN का एक मैक एड्रेस टेबल होता है. VPN 0 का राउटिंग टेबल होगा. व्हाट वी हैव टू से, मेरे को डिफॉल्ट तो डिफाइन करना पड़ेगा ना. मुझे तो बताना पड़ेगा कि भाई अगर तुझे उस पे जाना है इंटरनेट पे, डू वन थिंग, जस्ट यूज द डिफॉल्ट आउट. द नेक्स्ट ऑफ इंटरफेस इज व्हाट? दिस गाय. यहाँ तो एज एज क्या नेक्स्ट होप को हम टी लॉक करते हैं ना, आइडेंटिफाई। अरे यार मत पूछ, अब तू कुछ टीलॉग वीलॉग मत हुआ, बात छोड़ दे उसको. रहने दे. कहाँ टीलॉग पे चला गया तू? यहाँ यहाँ टीलॉग कहाँ पे यूज होता है? वैन पे होता है ना. ये वैन है क्या? हाँ, ये तो खैर कंट्रोल है। छोड़ दे टीलॉग. So now from the V manager I have to tell this guy, देखो सिंपल सा लॉजिक है. जब ये बंदा V मैनेज को तो रीच करेगा कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ये बंदा जब V मैनेज को रीच करेगा कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो ये रिप्लाई तो देगा ना, माइक ऑन है, रिप्लाई देगा. तो रिप्लाई के लिए तो पाथ होना चाहिए, माइक ऑन है, रिप्लाई के लिए तो पाथ होना चाहिए ना. तो पाथ के लिए मैंने क्या किया, मैंने बोला कि जब भी कोई पैकेट आएगा ना तो तुमको किसको भेजना है? इस बंदे को. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डिफॉल्ट डॉट सेट कर दिया कि whenever you are receiving any packet for the any destination, use this default dot, and for this default the next stop is what? This guy. और इसके पास तो सारा इंफॉर्मेशन होगा, because this guy is connected with the what? MPLS and ISP. क्लियर होगा? क्लियर हो गया। Done. Let's go and commit this guy. Now VPN 5112 exit. VPN 5112, which interface? Ethernet interface E0. Then IP address is what? Which interface IP address? 1.1, right? /24. No set. कुछ करने की जरूरत है क्या इसमें? छोड़ दो उसको, हो गया. तो आप वीपीएन नहीं डालोगे आप वो क्यों डालूंगा मैं? मुझे ये 5 बता.
डाल दिया 512। 512 डाल दिया आपने? ओके। क्या मुझे यहाँ पे सर्विस अलाउ करने की जरूरत है क्या? इस साइड से, इस साइड से मुझे सर्विस अलाउ करने की जरूरत है क्या? जैसे इंटरनेट नेटवर्क मेरे में वो है क्या, स्लीपिंग टूल तो होगा यार। आई मस्ट हैव स्लीपिंग टूल। आप प्रिंट शॉट ले लो ना सर आप इसका, आपके कैसे की, लेते हैं? अरे आपके लैपटॉप में वो देखना आपके प्रिंट प्रिंट शॉट के स्क्रीन पास। होगा, प्रिंट प्रिंट स्क्रीन। स्क्रीन, हाँ प्रिंट स्क्रीन हो। ऑल्ट के बगल में होता है, स्पेस बार के पास। ये देखा। हाँ मेरे में नहीं है। क्या बात कर रहे हो? होता है, कंट्रोल विंडोज एल। ही है ना? हाँ ये रहा। हाँ, आप होगा, वो क्लिक कर, कॉमन है। बस क्लिक करने के बाद आप पेंट खोल के उस पर कंट्रोल वी कर दो, आ जाएगा। नहीं आ रहा भाई। अरे पेंट आप खोलो ना, पेंट। कुछ होता नहीं है, मतलब वो ऑलरेडी प्रिंट स्क्रीन ले लेता है। हाँ अच्छा, इट वोंट शो यू एनीथिंग। हाँ, यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर दो तो इट विल वर्क। कुछ ज्यादा नहीं हो गया पर। हाँ, बस स्क्रीन माइनस कर दो, जूम। कंट्रोल कंट्रोल माइनस, बस बस। देखो ऐसा है कि यहाँ पे ना, क्या मुझे इस बंदे का क्या मुझे इस पार्ट पे मुझे कोई सर्विस अलाउ करने की जरूरत है क्या, इस पार्ट पे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरे क्या बैठे होंगे, यूजर्स बैठे होंगे। ठीक है, मेरा सारा कॉन्फ़िगरेशन पुश किधर से होगा? वैन साइड से, दिस साइड से, यहीं से तो पुश होगा कॉन्फ़िगरेशन। तो मुझे इस साइड पे ना कोई सर्विस को अलाउ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, इफ यू सी राइट नाउ, मैंने सिर्फ VPN 512 में गया, जस्ट मेक आईपी एड्रेस। क्यों? जस्ट फॉर द सेफ पर्सपेक्टिव कि अगर मेरा ये डाउन हो गया इधर साइड का पूरा, तो ये बंदा इसको एक्सेस कर ले थ्रू द बैक साइड, आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट। राइट नाउ इफ यू सी टिल दिस पॉइंट हमने क्या क्या कॉन्फ़िगर किया? So we have done with this guy. We just need to move in the config terminal. Law. Yeah, bro. One question, like you configured VPN 5112 and VPN 0, right? So, why these two VPN concept is coming like VPN 0 and VPN? You told three VPN, right? So, uh, which is like VPN 0 here, it would be management VPN, Right, right. and VPN 5112 it बोल बोल, सही जा रहा है, बोल सही जा रहा है, बोलते जा। हेलो। Hello, am I हाँ, audible? now you are audible. Okay. So what is 5112 over here? बताता हूँ, एक मिनट बता देता हूँ। Let me write down the configuration and I will explain it. रानी मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके, मेरा सूरत क्यों मेरे को दिल। ये सिस्को का ही था, iOS लगभग ऐसा ही है। तो नहीं, इन्होंने मैं थोड़ा सा ऑलमोस्ट सेम है। कमांड उन्होंने थोड़ा सा अलग कर दिया, इसमें उन्होंने टनल इंटरफेस कर दिया, जबकि सिस्को राउटर में ये इंटरफेस टनल वन होता है। हाँ तो मतलब देखो, डिपेंड, हर आयुष पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, ठीक, हर आयुष पे। तुम चाहे जूनिपर पे चलो, इवन छोड़ो जूनिपर चलो यार, सिस्को में भी जो मल्टीपल वेंडर्स होते हैं, मल्टीपल नहीं, मल्टीपल राउट होता है, सिस्को XR हो गया, सिस्को आयुष हो गया, XC हो गया। उसके बाद मैं क्या बताऊं, मैं तुझे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि
वही लास्ट ऑप्शन एक ही है कि तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, तभी तुमको कमांड्स याद होंगे हर राउटर पे। मैंने अभी तक नहीं किया उसका प्रैक्टिस, तो मुझे याद नहीं है अभी। तो लाइक राइट नाउ इन दिस डेज व्हाट हैपन कि मुझे एसडीवैन के लाइक कमांड्स याद हुए, क्योंकि मैं एसडीवैन कर रहा हूँ प्रैक्टिकल आजकल, तो मुझे याद हो रहा है। तो तुमको करना पड़ेगा प्रैक्टिकल, बिना प्रैक्टिकल के वे कॉन्फ़िगरेशन कभी भी याद नहीं होगी। एक एग्जिट क्वेश्चन है इसमें था कि क्या? आपने जब इसमें किया ना अलाउ सर्विस ऑल, तो जब आपने अलाउ सर्विस ऑल कर दिया बट फिर भी एसएसएच और नेटकॉन्फ ऑन नहीं हुआ, अलाउ नहीं हुआ, उसके लिए आपने अलग से कमांड चलाए, वो भी तो सर्विसेज में ही आता है ना, जब आपने अलाउ सर्विस ऑल कर दिया तो। बाय डिफॉल्ट जब तुम अलाउ सर्विस ऑल करते हो ना, तो आप एक एग्जांपल देता हूँ, समझ इसको भी स्मार्ट। ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 है, यहाँ पे एसे फायरवॉल लगा हुआ है, ठीक है? समझ? अगर मैंने इसको यहाँ से की नेबर से बनाई ना, तो बनेगी, मस्त बनेगी, मक्खन वाली, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन लगा दिया ना, ऑथेंटिकेशन लगा दिया, तो पता है क्या होगा इस पे? R1 R2 पे सीसीआई ऑथेंटिकेशन लगा दिया बीजीपी का, तो नेबरशिप नहीं बनेगी। हम्म। क्यों नहीं बनेगी? ठीक है, ऑथेंटिकेशन चाहिए अबे तो होगा। ऑथेंटिकेशन तो दोनों पे लगा दिया ना, सीसीआई। अच्छा। क्यों नहीं बनेगी? क्यों इसलिए नहीं बनेगी, देखो अब यहाँ पे पंगा क्या होता है पता है? ए से बाय डिफॉल्ट टीसीपी को अलाउ करता है, करता है, हाँ। टीसीपी को अलाउ करता है, बट स्टिल नेबरशिप फॉर्म क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जब तुम ऑथेंटिकेशन लगाते हो ना, तो बीजीपी में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा ऑप्शन, शायद ऑप्शन नंबर 19 है टीसीपी का, ये क्या हो जाता है पता है? डिनाई हो जाता है। अब लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं पता है? कि भाई बाय डिफॉल्ट तो ए से तो टीसीपी को अलाउ करता है, मतलब नेबरशिप क्यों नहीं आ पा रहा है ऑथेंटिकेशन लगाने के बाद? क्योंकि इसलिए नहीं आ रहा है कि जब तुम ऑथेंटिकेशन लगाते हो तो ऑप्शन नंबर 19 इनेबल हो जाता है। जब ये ऑप्शन नंबर 19 इनेबल हो जाएगा ना भाई, तो ऐसा है कि ए से इसको अलाउ नहीं करेगा, और तुम्हारी बीजीपी कभी अप ही नहीं आएगी। तो हमें मैनुअली जाके ए से क्या करना पड़ता है? ऑप्शन नंबर 19 को अलाउ करना पड़ता है मैनुअली जाके। तो स्टिल बाय डिफॉल्ट टीसीपी अलाउ है ए से पे, बट कुछ कुछ ऑप्शन डिसेबल होते हैं। सेम थिंग इज हैपनिंग जब तुमने अलाउ सर्विस ऑल किया, तो इसने उसी सर्विस को अलाउ किया जो मैंडेट थे, लाइक ऑप्शनल में आ रहे थे। उसने एसएसडी को और नेटकॉम को अलाउ नहीं किया। तुमको इसको अलाउ करना है तो तुमको मैनुअली अलाउ करना पड़ेगा। हर चीज जब तुम अलाउ ऑल करते हो ना, तो हर चीज अलाउ नहीं होती है, कुछ कुछ चीज रह जाती है। और उसको अलाउ करने का रिक्वायरमेंट यही है, अगर तुम इसको अलाउ नहीं करोगे, then you will not push your configuration from the vManage to the vController, sorry, vSmart. Next part is what? Done this guy commit and the VPN 5112, then ether interface E0, then IP address will be no shutdown. Commit. देखो भाई यहां तक किसी को दिक्कत है इस कॉन्फ़िगरेशन में? दिस इज फॉर द vManage कॉन्फ़िगरेशन, यू कैन आस्क मी नाउ। मैं अमित एक्सप्लेन करता हूं तुझे VPN का कॉन्सेप्ट है भाई। Okay. सो दिस इज फॉर द vManage कॉन्फ़िगरेशन। vSmart का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? ऐसा ही तो होगा कुछ, क्या क्या चेंजेस होंगे? जो तुम्हारा vSmart का कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो उस पे क्या क्या चेंजेस होंगे? System IP, V1 will be same. This should be IP address will be what? 101. Allow service default out 1 or 2. और कुछ चेंज होगा क्या? नेट कॉन्फ इस पे भी इनेबल रहेगा? क्या होना तो पड़ेगा। अच्छा, सर्विस मतलब ये रिसीव करने के लिए ना? हम्म। ओएमपी के अंदर तो नेट कम चल ही रहा होगा ना, तो ओएमपी जहां 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 जैसे 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 मेरी डीटीएलएस कनेक्शन जहां जहां बनती रहेगी, तो सारे पे तुमको अलाउ करना पड़ेगा, नहीं तो कोई ना कोई पैकेट फंसेगा। डिफॉल्ट डिफॉल्ट राउट। डाल तो दिया डिफॉल्ट आउट, हाँ। डाल दो कॉन्फ़िगरेशन वी स्मार्ट पे जाके, कॉपी होगी यहाँ से, मुझे यहाँ पे कॉपी होगी। एडमिन, एडमिन कंट्रोल कॉन्फिग टर्मिनल,
हो जा, यही मिस्टेक हो गई। सिस्टम, अच्छा टनल मिस्टेक, इंटरफेस। कोई टनल इंटरफेस नहीं है, ऐसा है कि सिस्टम होस्ट नेम बीच में ना स्पेस वो आता है आइकन। हो गया। एंड देन VPN 0 में चलो, डू शो रन VPN 0। इंटरफेस एसोसिएट हो गया VPN 0 में जाके, टर्न इंटरफेस, नॉट इंटरफेस, इथ 0 इथ 1, टर्न इंटरफेस, allow service all, allow service netcom, allow service SSD, and then what, exit IP root 0.0.0.0 16.3.254, and commit VPN 5112. So I think so I did the configuration VPN 512, VPN 5112. Yeah, it's done, right? It's 1/2 is done. So all done, commit, save it. This guy has done, right? Now same thing we have to do, what? Configuration of the V want. ठीक है, भाई V want तो मैं खुद ही हूँ, तो local, I'm a V want, right? It's I'm a V want. Nothing, 3.3.102, 102, right? That's the IP address of mine, and last of the netcom, everything is good. Now this guy's a 103, right? Cool. Let's configure it. V1, भाई first, इस पे क्या मिस्टेक हो गई? सिस्टम आईपी तक तो सही था, ऑर्गेनाइज, ओह माय गॉडनेस, सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन नेम एनएच इंडिया, कमिट टू रन, कमिट का मतलब सेव। यस राइट, टू रन VPN 0। तो इसमें भी होती है कि कमिट चेक, कमिट कंफर्म वगैरह कमांड? मैंने कभी देखा नहीं है, देख लेता हूँ। VPN 0/0, oh I'm so gig 0/0 dude, interface gig ethernet 0/0, IP address will be, no shit, and turn on service, allow service all, allow service SSD, allow service netcom, type exit IP root 16.3.10.254, and VPN 5112, start to realize, yes, VPN 5112, interface 80, IP address will be /24, no shut, done. अब क्या बचा? हो गया सर, वी स्मार्ट पे आई थिंक सो, ऑर्ग नेम इज नॉट देयर, लेट मी चेक।
to show run system. There. System organizer name NH India. There. Commit. Okay, all done, right? So this is all done. So if you see the अब commit, उसकी फुल कॉन्फ़िग दिखाना। देखा लो why it's happening. Our WebAngel interface Ethernet 1 if name invalid interface ETH1 is specified. Okay, there's some issue. Do show run VPN 0. Why you are not taking VPN 0? Okay, man. Interface Gigi. Oh, it's Gigi. So Gigi. कहाँ चल रहा है टीवी? Why? What do you want now? VPN 0. I removed that. No interface. No interface. ETH1. Yep, it's good. So Gigi is fine, and encapsulation allow service DSCP and netcom, and IP route is done right. And do show run VPN 512. All good. हाँ क्या बोला अमित? एक बार वी स्मार्ट की कॉन्फ़िग दिखाना, वो नोटपैड ओपन करना है तो। अच्छा नोटपैड कर देता हूँ, नोटपैड में समझ आएगा इजी। हाँ वही तो। Here are VSmart configuration. This is for the vManage and this is for the V1. So meantime, I'll change this guy. तुम तब तक देखो. Interface Gigi. Order. अच्छा, जो ये तीनों चारों कंट्रोलर है और ये कि अपना वीएज होता है, इस इनमें चारों में सब में ये दोनों वीपीएन होते हैं बाय डिफॉल्ट, राइट? Right. अभी Right. हम्म, ये देखो, this is called what? This is called as a skinny configuration. ये तो भाई करना ही है. हाँ, सही है। ये basic configuration. This has to, it can be done by the any L1 engineer as well as. I hope every command का मतलब पता चल गया होगा. COMTOL system, host name system, IP site ID we want, clock time zone, organizer name, commit. इसका भी सबका मतलब पता है तुमको, right? So now if you see, if you just go on this guy and we want, right, eventually you must have a communication with every person, right? So if you see right now, ping, I just want to ping 172.16.3.100. I'm getting the reply is working fine, right? So from the V bond, I have a good communication with the V manager, right? And if you see when I ping 172.16.3.100, by default उसने किस VPN से पिंग किया? VPN 0. तो मतलब अगर मैं यहां से पिंग करूंगा इस इंटरनल आईपी को, तो पिंग होगा? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि वी आर इन द VPN 0. इफ यू वांट टू पिंग दिस गाय, तुम क्या बोलना पड़ेगा? भाई ये जो बंदा है ना, किसमें है? 512 में. Destination host is unreachable. Why? We have some issue in the other side, right? We'll solve it. That's not a big deal. At the end, ये देख लेंगे. It's not a big deal solution, right?
Let's check the connectivity with the vsmart now. Ping, and I say that 172.16.3.101, and it has to be ping, all done right. सो भाई ऐसा है कि इसकी और इसकी तीनों की कनेक्टिविटी सही है। इस साइड की, इस पूरे साइड की कनेक्टिविटी मस्त है। मतलब मैंने यहाँ से, आई जस्ट पिंग फ्रॉम हियर दिस गाय। सो from here I have a good connectivity with this guy, right? From here I have a good connectivity with this guy right now. Let's see why this is not working. Let me go and what's that? We want ping. We show run VPN 512 first. It's working. So ping VPN पिंग होगा। 5.12.11. Not working. Leave it. 1 or 2. लिखना पड़ता है क्या VPN 5112 अगर ना लिख कर डायरेक्ट आईपी एड्रेस लिखे तो भी चल तो जाएगा? नहीं नहीं, अगर तुम VPN 512 नहीं लिखोगे ना तो VPN 0 का मेमोरी चला जाएगा। बाय डिफॉल्ट VPN 0 से लेता है पिंग। तो देखो, पर डिफॉल्ट राउट तो हमने दे रखा है ना, विच इज लाइक फॉर एनी आईपी dude, अवेलेबल। we are pinging in the internal network right now. Avita, Neha, Monica, we are pinging in the internal network right now. हम्म। तो इंटरनल नेटवर्क में डिफॉल्ट आउट का कोई फर्क ही नहीं पड़ा है ना। डिफॉल्ट आउट कब यूज होता है? जब हमें बाहर जाना हो। अपने डोमेन से। राइट, अभी हम सेम डोमेन के अंदर है, इसी डोमेन में। ठीक है, तो इसमें डिफॉल्ट की कोई नीड नहीं है। तो राइट, तो पिंगिंग व्हाई, देखो अगर इफ यू सी राइट नाउ, मैंने वी वांट से इसको पिंग किया एंड वी आर एबल टू पिंग विच गाय 1 और 2, राइट? तो मतलब वी वांट से इसकी कनेक्टिविटी, बट वी इसकी कनेक्टिविटी नहीं है। व्हाई? लेट्स गो ऑन अ वी मैनेजर, मे बी सम इशू ऑन द वी मैनेजर साइड, एंड लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर। हाँ, कमिट नहीं किया था ना, इसलिए मैंने आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया बट कमिट नहीं किया था। सो नाउ इट विल बी पिंग। या इट्स वर्किंग राइट। और ये ऑर्गेनाइजेशन नेम का क्या यूज है? अगर जब तुम वी स्मार्ट अकाउंट बनाओगे ना सिस्को पे ओके, जाके, अच्छा, द थिंग यू तब टोल्ड जाके यस्टरडे। आपको डिफाइन बताना पड़ेगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तुमने एसडीएन सॉल्यूशन लिया है। क्योंकि ये जो वीएचएस जो राउटर है ना मेरे पास, ये लगे हुए हैं, ये हम्म। वाले, इसका जो सीरियल नंबर होगा वो मेरे वी मैनेजर में होगा, दिखेगा तुमको। आई शो यू इन द नेक्स्ट वीकेंड ओवर। ओके। इसलिए तो वो जो नाम होगा ना वो भी कॉन्फ़िगर होगा वी मैनेजर ऑलरेडी पहले से। ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फ़िगर करना कंपलसरी है? बिना उसके आएगा ही नहीं। अब दिखाऊंगा मैं, बहुत इशू दिखाऊंगा, डोंट वरी, वी हैव तो लॉट्स अगर ऑफ। मैं करना चाहूँ इसको इंस्टॉल अपने सिस्टम में तब तो फिर मैं नहीं कर सकता क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन नेम मेरे पास नहीं है। तुमको स्मार्ट अकाउंट टाई अप करना पड़ेगा। उसके लिए तो पैसा पे करना पड़ेगा अरे सिस्को को। फ्री है, फ्री है रे, पैसा, हर चीज में पैसा, हर चीज में पैसा, ऐसा थोड़ी ना होता है। हम्म। Let's see. Oh no, it's my IP address. That's 101. What's my PC IP address? Let's see. Let me, if I'm able to open the, it's 105 is this IP address, and आपके रैक को तो मैं एक्सेस नहीं कर सकता ना यहाँ घर पे बैठ कर अपने कर सकता है वीएनजी ना, के थ्रू। कर सकता है। वो तो आपका प्राइवेट आईपी है। अरे तो जूम खोल लेना। हाँ वो जूम के थ्रू कर सकता हूँ, डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता ना ब्राउजर के थ्रू। नहीं, डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। हम्म। ब्राउजर के लिए मुझे पब्लिक आईपी लेना पड़ेगा भाई। पब्लिक आईपी मुझे डर लग रहा है लेने में इस बार, पता नहीं। मतलब मैं लेने जा रहा था बट मुझे समझ में नहीं, नहीं लॉ नहीं। मैं कहा, ठीक है नहीं। तो ऐसा हुआ, इसलिए मैंने नहीं लिया। नहीं, ऐसा कुछ होता तो नहीं है। अब इसमें आप अपने पे अटैक करके भी क्या कर लेगा? यहाँ पे कुछ है नहीं, वीएनजी चला लेगा, इमेज चोरी कर लेगा, और क्या है, वो भी देखेगा। आपका एक्सेस अगर आपका सर्वर अगर एक्सेस हो जाता तो फिर तो मजे ही मजे। हाँ,